Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of Dear Sister. I hope you guys are doing well. I've come back after a long break. I was traveling, मैं उम्र पे गई हुई थी, and then for the longest time we were feeling unwell. अभी भी मुझे एक बहुत annoying सी खांसी हुई है, so if it happens in the middle, I apologize in advance. But I'm back now and I'm here to host. I'm sitting with Izza and Sanya today. Sanya से आप लोग मिल चुके हैं in my absence. This is my first podcast with her. Yeah. Izza, I've been sitting with from before. How are you girls feeling today? Good, really good. Really Good? excited. Yeah. I don't know. Today is an excitement. Actually काफ़ी दिनों से बारिश हो रही थी ना, तो सुबह सुबह ही ग्लूमी हो जाता था, लेकिन आज नहीं थी एंड द सन वाज रियली आउट देयर, तो मुझे एनर्जी मिली है बहुत मेरे लिए अच्छी। तो ज़्यादा एक्साइटेड ये है बिकॉज आई एम डूइंग माई फर्स्ट पॉडकास्ट विद यू सो अच्छा. So exciting vibes. Do you guys like winter? आई लव विंटर्स. Do you? आई लाइक हाउ गर्मी से नहीं बचना होता इसमें, बट आई हेट के सब वो हो जाते हैं जस्ट Gloomy? they don't feel like working. Doing anything. Gloomy, हाँ. Yeah. Just lazy lifestyle हो जाता है ना. I hate that. वरना I enjoy what it is. Yeah, I love winters. It's fun. It's like, I'd say कि autumn is my favorite season, but I really like winters as well. Summers तो मुझसे बर्दाश्त नहीं है यार. Like समझ तो बहुत मुश्किल है. मेरा उल्टा होता है, गर्मियों में I don't feel like doing anything because it's too hot. So I'm just like, please मुझे AC में बिठा के ना बस रख दे कोई. मैं जो हूँ कि इतनी गर्मी में चीज़ें नहीं कर सकती. Especially going outside, which is so odd because लोगों को ठंड में बाहर जाना मुश्किल लगता है, मुझे गर्मी में बाहर जाना. I like walking on the streets in winter nights. Yeah. It's really nice. I think you can make yourself warm enough, Yeah. but you cannot Yeah, make yeah. yourself cool enough. That's If the sun is there, it's just there. But yeah, so winters are here, so I'm happy and excited. I'm like the complete opposite. Like you will feel कि अच्छा मेरे अंदर ज़्यादा energy आ गया for some reason. Anyway, so today we were thinking of talking about personal boundaries, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. And I think at some level we've all sort of, I guess, struggled with it as well. And also learn to understand कि हमारी अपनी personal boundaries Yeah. exactly है क्या. बिल्कुल. I think बचपन में आपको पता भी नहीं होता True. कि boundaries हैं क्या. So is that for you? When you hear the word personal boundary, so what comes to your mind? कि what are your personal boundaries? I would say a few of them. आई रियली टेक टाइम टू ओपन अप. जब मैं किसी इंसान से मिलती हूँ तो अच्छा मुझे होता है कि कोई इंसान जब शुरू में मिल रहा हो ना तो बहुत ज़्यादा ओवरली जॉली ना हो. लाइक दैट इज़ समथिंग विच आई जस्ट कैन नॉट वाइब विद. तो मेरी एक वहाँ पर पर्सनल बाउंड्री हो जाती है कि इफ़ यू एक्सपेक्ट मी टू ओपन अप तो मैं उस तरह से ओपन अप नहीं हो रही होंगी. एंड आई डोंट एक्चुअली, आई जस्ट नेवर वाइब विद पीपल जो कि शुरू में बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं. तो दैट इज़ काइंड ऑफ अ पर्सनल थिंग. और अगेन पर्सनल बाउंड्री इज़ रियली पर्सनल. तो मेरी जो है वो आपकी नहीं होंगी, ना ही वो सानिया की होगी. तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड टू, क्योंकि हर इंसान की अलग होती है और आप ज़्यादातर जो चीज़ खुद फील करते हैं ना आप वो बाकियों पे भी अप्लाई करते हैं. तो समटाइम्स इवन इफ़ यू हैव द बेस्ट इंटेंशंस इट डजेंट कम आउट राइट, क्योंकि आपको अगले इंसान की पर्सनल बाउंड्रीज़ का नहीं पता होता. तो दैट इज़ समथिंग आई फील अबाउट पर्सनल बाउंड्रीज़. Yeah, and that's why I asked, what do you what is your Yeah. idea of personal boundaries? Because हर किसी का like different होता है. So Sanya, when I say personal boundaries, so what are some of the first few things that come into your mind? Okay, so मेरे लिए पर्सनल बाउंड्रीज का एक टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव है बिकॉज मेरा ये एक इशू था बहुत पहले कि मैं बहुत जल्दी ओपन अप हो जाती थी, बिल्कुल ऑपोजिट टू इज़्ज़ा. या मैं बहुत जल्दी ओपन अप हो जाती थी. तो इसकी वजह से व्हेन यू आर ओपनिंग अप विद समवन टू समवन, तो दे लाइक कि इसको तो कुछ भी कह दो, शी विल बी फाइन विद इट. तो वो फिर मुझे हुआ कि नहीं, आई नीड टू वर्क ऑन माई पर्सनल बाउंड्रीज. तो जब मैं पर्सनल बाउंड्रीज का वर्ड सुनती हूँ, इट्स लाइक कि देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन बदतमीजी and giving a remark to someone. So if someone is going to cross that, that's going to be very irritating for me. और फिर मैं automatically उस बंदे से बहुत हो जाती हूँ कि दिल उठ जाता है. दिल उठ जाता है बिल्कुल.
specifically when someone not on me but any generally when someone comments on anybody's skin color, anybody's weight, anybody's hair, like dude, just don't. Like, they know what they're going through and they know what's going on, so just don't pinpoint, oh my god, this is the thing. So yeah, so in my understanding, for you, personal boundaries has a lot about what somebody is sort of allowed to say to someone or not allowed to say to someone. Yeah, boundaries जो है ना, like see, personal boundaries एक तो इस तरह की होती हैं where like you feel like कि कोई सर्टन बिहेवियर कर रहा है, यानी कोई बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली हो रहा है, या फिर कोई अगर बहुत ज़्यादा जो है कोई ऐसी बात कर रहा है दैट दे आर नॉट सपोज टू से, इस तरह की होती हैं. बट कुछ पर्सनल बाउंड्रीज इस तरह होती हैं जैसे आपको होता है कि फॉर एग्जाम्पल सेइंग नो मीन्स के व्हेन समबडी ट्राइज टू ओवरली persuade you for something, right? For me that is extremely annoying. It's just like, if I don't want to do something, then don't make me sort of force. Don't force. Try to do it. और ये प्रॉब्लम ये कि हमारे कल्चर में तो बहुत ज़्यादा है. Yeah, so you're just like, और उसमें होता है कि अगर actually the problem becomes worse when a lot of people actually keep convincing you to do something या force you to do something because that is considered better in our culture. So for example, खाना ठुसवाना. oh god, मैं literally इसी पर आने वाली थी. Yes. like आप बोलते जाओ, like I know I get it, like क्योंकि आपने इतनी weird चीज़ें create कर दी है कि तकल्लुफ़ भी करनी है, फिर कन्विंस भी करना है, फिर अगले ने माइंड भी नहीं करना, तो आप कहे भी जाओ लेकिन अगले बंदे को भी नहीं समझ आती ना कि वो तकल्लुफ़ में मना कर रहा है, तो मैं दोबारा बोलूँ. we are in the transition phase, right? this is our culture now. हमें वो होता है कि नहीं, कुछ लोग like ट्रांजिशन फेज में इस लिहाज से कह रही हूँ कि पहले तो हम सारे ये तकल्लुफ़ वगैरह करते थे, एंड दैट माइंडसेट ऑफ ऑल्दो चाहिए लेकिन हम कह रहे हैं नहीं चाहिए, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं. तो कुछ लोग उस माइंडसेट से कह रहे होते हैं कि नहीं हमें और नहीं चाहिए, और कुछ बिल्कुल सीरियसली कह रहे होते हैं कि हमें वाकई नहीं चाहिए, एंड उसकी नहीं समझ आती. सो लाइक इवन माई सेल्फ बिकॉज दैट इज़ द नॉर्म इन आवर कल्चर. हमारे घर मेहमान आते हैं, सो आई टेल देम के आप it's there, and that is something you have to offer. But then वो मना करते हैं, then you have to say थोड़ा सा और लेकिन एक पॉइंट आता है कि बार बार आप कहो ना उनको, तो आप खुद कहते हो कि बस like two times is like enough. It's enough. But वो पता है, हम लोग थोड़ा सा सीख चुके हैं. कभी कभार हमारे बड़े होते हैं, वो तो बस कहते हैं कि नहीं भाई और लो डाले जाते हैं. अच्छा, वो प्लेट में भी डाल देते हैं, and then you with the full stomach you're like अब खाना पड़ेगा. अब बहुत बुरा लगता है because you can't even leave it, right? You can't leave it then. So I mean, I know this is not a big deal, but this is an example of how we're casually just doing whatever, forcing people. इसी तरह like आप functions पे जाओ तो it's like dance करना है और फिर जबरदस्ती. That one is a bit more annoying because some people are not comfortable. Exactly. True. But then लोगों को ये भी होता है कि, लेकिन हमारे कल्चर में ये प्रॉब्लम भी है, अगर आप लोगों को ना बोलो ना तो वो घर जाके ऑफेंसिव हो जाते हैं, हमें तो बुलाया नहीं. अच्छा, डांस फ्लोर पे लाइक हमें तो लिफ्ट ही नहीं कराई. हम तो बैठे इट्स अ लॉट ऑफ प्रिटेंशियसनेस, राइट? मतलब सब प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि अच्छा नहीं चाहिए लेकिन चाहिए, अच्छा डांस नहीं करना लेकिन करना है, एक्चुअली दिल में और है, जुबान पर कुछ और है. सो दिस इज दैट थिंग, कन्फ्लिक्ट, कि हमने डांस करना था लेकिन हमें किसी ने बुलाया नहीं, तो हम गए ही नहीं. हालांकि आपको इतना ओपन होना चाहिए, लाइक इफ आई वांट टू डांस आई वुड डेफिनेटली गो ऑन द डांस फ्लोर. अगर आपको बुला भी लो, उनको 2-3 दफ़ा बुलाओ तो वो फिर खुद भी अनॉय हो जाते हैं कि यार क्या, और अगर ना बुलाओ तो कहते हैं उन्हें तो सानू बुले. exactly that. That's very annoying. So, like, अच्छा लेट्स से कि आप किसी पर्सन एक्स को बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन जो पर्सन एक्स है दे आर सिटिंग इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो आप उन ग्रुप ऑफ पीपल को बुला रहे हैं, वो ग्रुप नहीं आ रहा, ठीक है, सम ऑफ देम आर सेइंग नो. जो पर्सन एक्स है ना, वो चाहता है कि आप पर्सनली उसके पास जाएं और कहें कि आप आएँ, हालांकि आपने पहले पूरे ग्रुप को मुखातिब होकर कोई बात की है. तो ये भी एक चीज़ है कि पीपल वांट कि आप पर्सनली जाएं, हर इंसान से पूछे कि आप भी आएँ यहाँ पर. बट दैट्स वेयर द बाउंड्रीज दे बिकम वेरी कंफ्यूजिंग. बिकॉज आपको समझ नहीं आती. अच्छा, लाइक यू सेड कि आपको अपनी बाउंड्री और दूसरे बंदे की बाउंड्री में फ़र्क नहीं समझ आती. बट आई डू फील कि आई थिंक द मोस्ट
the basic way is ask someone once, ask them twice, and if they continue to say no, respect that. Yeah, exactly. Yeah. We should respect others' opinions as well, as much as we respect ours. Yeah, मतलब I'd rather कि कोई ये माइंड कर जाए कि मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं किया, rather than कि ये माइंड कर जाए कि मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया. Yeah, Do true. you agree? That's me. Yeah, I totally that is agree with annoying. it. बिल्कुल. बहुत ज़्यादा वाला बहुत annoying हो जाता है. मतलब then you can easily say यार मैंने आपको कहा तो था. You can't complain about it. You cannot I think I said it enough times. हाँ, but I think respecting somebody's no is like extremely important. और जाहिर है वो तो फिर आप हर केस में apply होता है. Yeah. Somebody came on my podcast once and she said कि बचपन से हमें हमारी बाउंड्रीज होती हैं दैट वी सेट और ट्राई टू सेट, लाइक बच्चे भी सेट करते हैं. एंड शी सेड कि आपका बेटा, शी सेड आई रियली वांट टू मीट योर सन. आई सेड ही इज स्लीपिंग राइट नाउ. आई थिंक मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में बताया है. एंड शी सेड ओके दैट्स हिज बाउंड्री, लाइक आई एम नॉट गोना से वेक हिम अप बिकॉज आई एम हियर राइट नाउ एंड आई वांट टू मीट हिम. एंड मी एज अ मदर आई हैव टू इंश्योर दैट आई रिस्पेक्ट दिस बाउंड्री फॉर हिम. Exactly. And tell people that okay, no, he can't meet right now, or उस तरह की चीज़ें. He's not comfortable. He's cranky. He's cranky right now. या उसका वो वाला सीन है. मतलब because मैंने and I realized this कि now that I have a son, a lot of times he's not in the mood for something. He's unhappy. उसका नहीं दिल चाह रहा. But if in that moment I'm trying to force him into like socialize. That's not fair because he is too small to set a boundary, and this is his way of setting a boundary. True. I'm not in the mood right now. So बचपन से ही होती हैं आपकी boundaries. And I think, I don't know, हमारे पेरेंट्स में बाउंड्रीज का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था. इट्स लाइक कल्चरल नॉर्म्स ओवर ऑल काइंड्स ऑफ बाउंड्रीज. अब जाके वो थोड़ा सा लाइक हमें समझ आना शुरू हुई है. हमारी जनरेशन और हमसे पिछली थोड़ी सी जनरेशन को समझ आया कि I like how this is literally being translated in our spaces, क्योंकि मैं उस लिहाज से सोचती हूँ एज एन आर्किटेक्ट. तो अच्छा पहले आप इतना कंबाइंड आपकी लिविंग होती थी, बट नाउ और आपके पास एक ही कम्युनल वॉशरूम होता था. अच्छा, घर में 2-3 वॉशरूम्स होंगे जो कि सब इस्तेमाल करते हैं. पहले मास्टर बेडरूम का तो इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता था, बट नाउ पर्सनल बाउंड्रीज आर अ थिंग. एंड हर कमरे का अपना वॉशरूम है, कोई हॉलवे के वॉशरूम में नहीं जाता. एंड ऑल ऑफ दैट. एंड आई थिंक पेरेंट्स भी अभी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं इस चीज़ के कि करना चाहिए भी. आई थिंक सो बिकॉज वी आर इन दैट स्टेज ऑफ लाइफ एंड दैट एज ऑफ लाइफ के वी शुड नो के ओके फाइन, हर कमरे के साथ वॉशरूम होना इट्स नॉट अ बिग डील. एंड एक्चुअली प्राउड ऑफ देम फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि 40 years अगर वो एक कॉन्सेप्ट के साथ जी रहे हैं एंड जस्ट बिकॉज देयर चिल्ड्रन वांट समथिंग और वो उसको समझे, दैट इज़ अ वेरी लाइक a blessing. That's a blessing कि उनको समझ आ रही है इस चीज़ की. हाँ, बस आई जस्ट फील कि जैसे हम बच्चे हैं ना, अब अगर मैं छोटी होती, अब तो ऑब्वियसली हम बड़े भी हो गए हैं. एंड माई मदर इज़ लाइक, शी इज़, इवन माई डैड, दे वर ऑलवेज वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ बाउंड्रीज. आई डोंट नो वाई और हाउ. लेकिन अगर बचपन में मैं कहती कि ये प्लीज़, ये मेरी बाउंड्री है, इसको ना क्रॉस करें, मेरी अम्मी ने एक लगा What the hell is a boundary? I'm your mom. Yeah. Come, I'll show you boundaries. So like अब हमारे, so मुझे ये होता है कि ठीक है, like it's like you also have to find that balance, right? अब आप अपने बच्चों को बाउंड्रीज का सिखाओ, सारी बाउंड्रीज आपके लिए लगा के बैठ जाए. बिल्कुल. Mom, this is my personal boundary. But I think after a certain age आपको बताना भी चाहिए अपने आपसे जो छोटे होते हैं कि this is your boundary, you should take care of it. आई थिंक हम काफ़ी हद तक ना जब परवरिश कर रहे होते हैं ना, तो हम उनको एक बाउंड्री का बता रहे होते हैं. लेट्स से किसी बच्चे ने रूडली बात कर लिया इस तरह, तो हम कह रहे होते हैं कि व्हाट, दिस इज़ अ लाइन दैट यू डोंट हैव टू क्रॉस. तो उनमें ऑलरेडी एक समझ आने लगती है कि व्हाट अ बाउंड्री इज़. मुझे जो आप बेबी का कह रही थी, उससे मुझे याद आया कि लाइक मुझे बहुत ज़ोर का कब पता चला कि अच्छा पर्सनल बाउंड्रीज किसी भी एज पे एग्जिस्ट करती हैं. तो व्हाट हैपेंड वाज दैट मैं कोई इंस्टाग्राम का पोस्ट पढ़ी थी इन विच वन मदर वाज एक्चुअली शेयरिंग हाउ हर चाइल्ड डाइड, हर बेबी डाइड. और बेबी बिकॉज दे उनका इम्यून बहुत वीक होता है, ठीक है, दे कैच वायरसेस एंड डिजीजेस रियली ईजीली. तो द सस्पेक्ट वाज के उन्होंने ये सस्पेक्ट किया था कि समवन लाइक किस्ड द बेबी और वहाँ से उसने कोई वायरस कैच कर लिया. I've read this news. Yeah, and
I was like, oh God, मतलब ये भी हो सकता है. I was unaware कि ये भी हो सकता है. And I was like, you know, जब भी मैं किसी बच्चे से मिलने जाती हूँ न्यू बॉर्न, तो I'm like, I want to kiss the baby, I want to show इसीलिए love न्यू to बॉर्न्स it. को नहीं वो करना चाहिए. I डॉक्टर्स मना don't kiss करते हैं. babies at all. Even though like my sister-in-laws, तब तक मेरा अपना बेबी नहीं हुआ था, but when my sister-in-law had her kids, I never kissed them. I still have never kissed them. Because मुझे होता है कि like I don't know, like बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई. You don't want to make them fall sick, and plus like I don't know, like it's just like, you know, I can't take that risk. Plus like I think कुछ पेरेंट्स भी माइंड कर जाते हैं, बट आई थिंक मोस्ट पेरेंट्स का कंसर्न बच्चों की हेल्थ होता है. पेरेंट्स माइंड इसीलिए करते हैं. एक दफ़ा मेरे साथ क्या हुआ था कि आई वेंट शॉपिंग एंड राफेल वाज विद मी एंड ही वाज आई थिंक 4 months, लाइक ही वाज रियली स्मॉल, बहुत छोटा था, या 5 months का होगा पता नहीं. And he was in my lap, and this woman comes and she's like, oh, random woman, strange woman in dukaan. She's like, oh my God, he's so cute. And then she gave him a kiss on the cheek. Oh God. Izza, Oh my God. I was devastated. Okay? Like, I knew that I would, like, if this ever happens, I would be upset about it. I was devastated. Oh my God. क्या हुआ है? मेरे ना आंखों में आंसू आ गए, बिकॉज दिस इज लाइक पोस्ट कोविड टाइम्स. इस टाइम पे लाइक मास्क भी चल रहे थे, लाइक कोविड का भी वक्त था ना. आपको ये नहीं पता कि आपको इतना भी नहीं पता कि लाइक चलो या तो प्री कोविड टाइम्स होते हैं, कोविड के बाद तो सबको पता है यार, लाइक आप हैंड शेक्स भी नहीं करते हो. एंड यू किस्ड माई बेबी एंड दैट टू यू डोंट इवन नो मी. मैं अपनी अम्मी के साथ गई हुई थी और मैंने इस तरह करके अपनी अम्मी को देखा, एंड माई मॉम न्यू दैट यू नो आई वाज लूजिंग माई माइंड. एंड देन माई मॉम वाज लाइक अच्छा तुम गाड़ी में चली जाओ. एंड आई वाज लाइक नहीं. आई टुक हिम, आई वेंट होम, आई वॉश्ड हिज फेस एंड आई क्राइड माई आईज बिकॉज नॉट बिकॉज यू नो मुझे कोई गलीज लगता है या कुछ, बट आई वॉज अफ्रेड दैट माई चाइल्ड विल गेट सिक. Exactly. और मतलब अगर उसे कुछ हो गया, लाइक ही इज माई होल लाइफ, इफ समथिंग हैपेंस टू मी बिकॉज सम रैंडम स्ट्रेंजर किस्ड माई चाइल्ड, तो क्या होगा? और कोविड के बाद तो वैसे ही सब इतने पैरानॉइड हुए होते हैं कि आपको मतलब देख के चलना पड़ता है कि क्या. Again for them, like it's a normal thing. Like इतना भी नॉर्मल नहीं होना चाहिए कि स्ट्रेंजर, लेकिन अच्छा कोई बच्चा प्यारा लग गया किसी का जानने वाला, तो दे विल गो, वो उनको प्यार करेंगे और फिर वो एक्चुअली माइंड कर जाते हैं कि पेरेंट्स ने उसको मेरे पास क्यों नहीं बुलाया. Exactly. लाइक पेरेंट्स वो बाउंड्री क्रॉस करे बच्चे के, वो रो रहा है जो भी उसको मिला इनसे. हाँ, दैट्स सुपर वियर्ड. तो आई थिंक उसकी वजह से ना बच्चे की भी आइडेंटिटी हो जाती है कि दे आर लाइक मेरी, आई डोंट हैव अ से. Yes. एवरीथिंग इज डिक्टेटेड बाय माय पेरेंट्स. तो वो बहुत पेरेंट टाइप का बच्चा बन जाता है. And also everything is dictated by pleasing people. Yeah. Like so a lot of the times, like you know, parents कहते हैं कि बेटा hug कर दो, kiss कर दो, hug दे दो, which is fine. Like you have to teach kids expression of love. It's essential for their like emotional and social upbringing. But if they're not comfortable, then don't force them to do it. Exactly. उसकी like 2 चीज़ें हैं. एक तो ये कि अगेन बाउंड्रीज की ना कॉन्सेप्ट उनके लिए बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाता है. देर जस्ट लाइक, एंड स्पेशली व्हेन पीपल से कि ओ आप मुझे हग नहीं दोगी तो मैं सैड हो जाऊंगी. ब्लैकमेल. एंड you're teaching them that you know if they don't show the love or do this, तो फिर लोग hurt होंगे. And then वो people pleasing और लोगों की feelings का ख्याल रखते हुए they will continue to do these things that they don't actually want to do. I think even that कि अच्छा आप मुझे ये करोगे तो फिर मैं आपको ये दूंगी. हाँ. It's like blackmailing ना. हम बचपन से ही उनको ये चीज़ सिखाते हैं, तो फिर obviously when in their growing years वो यही वो आदत हो जाती है. ही बता देते हैं कि दुनिया सारी बिजनेस है, तो दुनिया बिजनेस तो तुम्हें कुछ मिलेगा. Yeah, even like love, like you have to love me. Yeah, unconditional love नहीं है ना. And वही कहते हैं ना कि this is what eventually translates into people not understanding the boundaries of consent in sexual relationships. कि अच्छा like you know अगर अगले बंदे ने no कह दिया, that means no, you cannot touch them. Yeah. Exactly. Consent is like really important in every phase of life. Actually it goes both way. आपको कंसेंट की समझ नहीं आती कि यार अगला बंदा कंफर्टेबल है या नहीं, आप उसको फोर्स करी जाओ. और दूसरा आपको नो ही नहीं कहना आता बिकॉज बचपन से आपको बोला आदत ही नहीं है. कर लो तो you're just like if the other person is asking and even if you're not comfortable you're just like okay, which is just messed up.
Because छोटे होते हुए okay, a hug and a kiss doesn't matter, but later it translates into something much bigger. Exactly. So जो ये वाली चीज़ें I think And I think saying no is important not only in relationships or anything, in every phase of life, in school, universities, in friendships. Yeah, especially in friendships. In workplace, yeah, everywhere. Friendships में मुझे याद है कि you know what, like you choose people because you vibe with them, right? Not like I hope people don't do that कि social status की वजह से किसी को choose कर रहे हैं. Oh, people do that. Yeah, people do that, but People do that a lot. Let's just ignore that for a fact, ठीक है, for some time. तो जब आपने outing पे जाना होता है, ठीक है, तो some people are like, oh, you know what, let's go to that place, and some are like, नहीं जाना. तो कभी कुछ लोग ना adamant हो जाते हैं, वो ज़रा अड़ जाते हैं कि यार नहीं जाना, and that is their way of saying कि no, maybe I don't have money, maybe I really don't want, लेकिन बाकी दोस्त माइंड कर जाते हैं. Exactly. You know what, उसकी वजह से हमारा प्लान स्पॉइल हो गया. It could be literally anything कि वो इंसान उसका मूड नहीं है, या finances are a really big issue, and especially इतनी costly हो गई हैं सारी चीज़ें. तो we should learn to accept that कि अच्छा, that can be an issue, let's just respect that. बिल्कुल. yeah, and वही बात है ना, favors ask करना, then friends को मुश्किल लगता है कि मना करना. हाँ, yeah. So this one time I was in, I don't know, second year or first year, my teacher, I don't want to name her, what she did, हमारी थी ईद मिलन पार्टी, एंड ऑब्वियसली तब आपको इतना वो नहीं था, ओ माय गॉड मेरी बेस यहाँ भी लगनी चाहिए, मेकअप यहाँ भी होना चाहिए, ये यहाँ भी होना चाहिए. शी लुक्ड एट मी एंड शी वाज लाइक, सानिया आपके पाँव का कलर आपके मुंह से तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, मतलब aren't you wearing anything? And I was like, Oh God. What am I supposed to? I'm not wearing anything on my feet or on my move. Like, what do you expect me? And then I was like, ma'am, I'm not wearing anything, like any makeup anywhere, ना. तो she said कि अच्छा तो फिर आपके पाँव आपके मुंह से इतने सफ़ेद क्यों हैं? I was like, what should I do? How should I, like, excuse me, you're my teacher. I cannot even say you do, And that's a teacher. Like, that means she's a full adult, and she doesn't understand that dual shade on one single body is a thing. And like, how can you not know this? Exactly. And then after some time I got to realize I was not the only victim. There were other many girls who were like, यार ये मैम तो हैं ही ऐसी, तुम चिल करो, तुम परेशान है. I'm glad वैसे आपके इर्द-गिर्द और भी लोग थे who had to face this. वरना that would have really hurt कि I'm the only victim of it. उस टाइम तो मुझे मतलब boundary, उस टाइम I realized कि नहीं, there should be a boundary. I should have like, but obviously वो था ना कि मेरी टीचर है, मैं उनको कितना कह सकती थी. मेरे एग्जाम का रिजल्ट पड़ा था उनके सर में, तो आई वाज लाइक नहीं, इसकी वजह से दैट यू हैव समथिंग टू लूज, पर्सनल ग्रजेस डेवलप हो जाते हैं. ओके, यू कांट, पर्सनल ग्रजेस आपको खुद अपने आप को आप जज करने लग पड़ते हो, एंड यू लाइक, excuse me. That actually brings me to another topic of discussion, I mean under the same thing, but just because like you're older doesn't mean it does not mean exactly. You can just say like you still have to respect the boundaries of like younger people, and not just like older, but like किसी भी आप capacity में अगर you hold more power, so it can be professional, you can be the same age but आप you're higher in power, तो it doesn't mean कि आप कुछ भी बोल दो, because the other person has to respect that you are. बिल्कुल. बट इन आवर कल्चर ना हम लोग को ये सिखाया जाता है कि ओ माय गॉड बड़ों की हमेशा इज्जत करनी है, उनके ये नहीं करना. बट आई थिंक सो कि नाउ इट्स द टाइम दैट वी शुड टेल के एज डज नॉट डिफाइन द बेसिक एथिक्स, यू नो. आई डू हैव टू से कि आपको बड़ों की, आई थिंक दिस इज अ वेरी कोर वैल्यू. बड़ों की रिस्पेक्ट हमेशा करनी चाहिए. दैट इज समथिंग, आपने उनको कुछ कहना भी है, से इट रिस्पेक्टफुली, बट आई थिंक इट्स द बड़े that need to understand कि आपने भी रिस्पेक्ट. अगर बड़े रिस्पेक्ट देंगे तो छोटों को कुछ कहना नहीं पड़ेगा आपको, बिकॉज छोटे रिस्पेक्ट देते हैं और वो देंगे. एवरीबडी टीचर्स के यार ओल्डर पीपल नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड शुड बी रिस्पेक्टेड, बट ऑब्वियसली लिमिट भी होती है हर चीज़ की. एंड मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर बड़ा या ऐसा इंसान, also it, to be honest, also really depends on what kind of value they hold, right? Like कुछ लोगों का ये सीन है कि they really don't matter, तो चाहे वो बड़े भी हैं और वो कुछ हैं, आप तमीज़ से उनको बोल दो, लेकिन अगर वो जो हैं बहुत weird act कर रहे हैं तो फिर आप उनको बताना पड़ता है कि हाँ, जैसा एक दफ़ा ना
एक दफ़ा I was at a hospital, ठीक है, and then there was this auntie who was like, It's always an auntie. why damn it? Yeah, so we were in a line for the doctor or something. तो ना वो बड़े मज़े से आ रही है ना, लाइन काट रही हैं, and फला एक तो लाइन खैर आ रही हैं, लाइन काट रही हैं. अच्छा, अब दिस इज समथिंग दैट रियली गेट्स अंडर माई स्किन कि लाइक यार please, especially when you're at a hospital, everybody like needs to see the doctor, and if they came first then they've been waiting a substantial amount of time. आप लेट आई हैं तो आप पीछे खड़ी हुए हैं लाइन में. So उन्होंने आके क्रॉस की बड़े मज़े से कि भाई मैं तो बड़ी हूँ, ये तो छोटी है. इट्स नॉट लाइक शी वॉज ओल्ड और वो लाइक इस तरह होता है यूजली दैट इफ आई सी समवन्स ओल्ड, समवन्स अनएबल टू स्टैंड, तो मैं या किसी के साथ बच्चा है तो मैं खुद ही कहती हूँ कि यार आप चले जाओ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि उनकी इनकन्वीनियंस ज़्यादा है. इट वाजंट लाइक दैट. सो शी केम एंड शी क्रॉस्ड. या अगर आपका ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मुझसे आके बात कर लो कि लिसन लाइक आई हैव दिस व्हाटएवर इशू, तो कैन आई प्लीज लाइक या वो नहीं होता क्लेवरली बस साइड में खड़े होके आते मर्ज हो रहे हैं सारे. आप 2 सेकंड बाद देखते कि वो आंटी तो अभी बाहर थी. तो फिर आई वाज लाइक कि तो मतलब फिर मुझे असल में जब किसी का कोई हक मारता है ना, दैट इज समथिंग दैट आई कांट टॉलरेट. मतलब मुझे फिर मुझे होता है कि यार नो, आई बहुत सारी चीज़ों पे ठीक है मैं इग्नोर कर दूँगी, बट इफ़ दिस इज़ माई राइट और एनी बडी इज़ राइट तो देन आई एम नॉट गोइंग टू स्टे क्वाइट. सो आई वाज लाइक एक्सक्यूज मी आंटी, लाइक ये मेरी टर्न है, आपने लाइन काटी है. पता नहीं क्या उन्होंने कहा कि अच्छा गैस लाइट ठीक है आगे से, इतना क्या बिग डील हो गया बेटा, मतलब मैं आंटी हूँ मैं ठीक है, तो इतना क्या बिग डील हो गया. मतलब अपनी लैंग्वेज में उन्होंने जो भी बोला कि इतना कोई बिग डील नहीं है, एंड लाइक इट्स ओके व्हाटएवर, लाइक व्हाट्स द बिग डील इफ आई एम हियर. आपको ना बिल्कुल इस तरह कर देना कि समथिंग इज रॉन्ग विद यू फॉर रिएक्टिंग टू दिस सो मच. एंड आई वाज लाइक कि मैंने कहा कि आंटी आप मुझसे बड़ी हैं, आपको ये चीज़ ज़्यादा बेहतर पता होनी चाहिए कि ये नहीं करते, कि मुझे आपको कहना पड़ रहा है और बताना पड़ रहा है कि आंटी ये नहीं करते, मतलब यू शुड बी टीचिंग अस. फिर उसमें पता नहीं उन्होंने क्या रिमार्क मारा, समथिंग लाइक ये सारी इमरान खान की गलती है. शी इज लाइक हाँ आप लोग आगे ना आजकल की जनरेशन इमरान खान के बड़े फैन. इमरान खान की जगह आप क्यों नहीं खड़ी हो जाती? ओह माय गॉड, बेचारा इमरान खान, बेचारी आई वाज सो एम्बैरेस्ड बिकॉज उन्होंने इतना रूडली मुझे बोला आप क्यों नहीं खड़ी हो जाती इमरान खान की जगह. बड़े आए हैं इमरान खान की वो पता नहीं समथिंग लाइक दैट आजकल की जनरेशन, एंड आई वाज जस्ट लाइक आई वाज सो पिस्ड एंड शी स्टिल डिडंट मूव. इमेजिन. So what happened? Like they don't move. मैंने अगेन वही हक मारने वाली चीज़, मेट्रो में लाइन होती है या कहीं और कहीं भी लाइन होती है और कोई तोड़ा होता है, क्योंकि मर्द और ख़वातीन की अलग ही लाइनें होती हैं, तो इट्स ऑब्वियसली अ लेडी जो कि तोड़ी होती है. और अच्छा वाओ सेक्सिस्ट, ऑब्वियसली लेडी जो कि मेरी लाइन तोड़ी होती है. मैंने कभी किसी मर्द को नहीं तोड़ते हुए देखा ना अपने वाले उसमें. तो ज़ाहिर बात है अब साइड पे अगर मर्द वाली लाइन है तो मैं ऐसे तो नहीं घुस भी कहूँ अंकल आपने लाइन. अगेन पर्सनल बाउंड्री. तो आई हैव कॉल्ड आउट पीपल एंड हर एज के, इवन यूनिवर्सिटी के बच्चे भी ये कर रहे हैं, इवन जॉब वाले लोग ये कर रहे हैं, और फिर बाद में बड़े एल्डरली पीपल दे आर ऑल्सो डूइंग इट. और जब भी मैंने उनको कहा, मैंने उनको लाइक रिस्पेक्टफुली कहा है कि आप लाइन के दरमियान आइए, पीछे और भी लोग हैं, आपको चाहिए पीछे जाएं, ठीक है. हाँ कुछ मम्मल करके. You're right. No. And you're like, what minion language are you speaking? Yeah. They do that. But they don't. कभी भी उनमें वो नहीं आई कि आई शुड एक्चुअली गो बैक. नहीं वैसे मैंने 1-2 दफ़ा लोगों को पीछे भिजवाया है. I've done that. But हाँ, that's a success. लेकिन लोग वाकई में, and I think the best way to do it is to embarrass them, कि आगे पीछे के भी 2-3 लोग सुन रहे हो ना, तो फिर वो चुप करके पीछे चले जाते हैं. पर कुछ लोग नहीं चाहते, they just stay there. Auntie didn't go.
इनफैक्ट उन्होंने तो मुझे ऐसी चीज़ सुना दी थी, वो तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती ना कि जो एम्बैरेस ही नहीं होता है फॉर कॉलिंग देम आउट. इतना उन्होंने स्टोइक एक्सप्रेशन रखा होता है ना, अब कोई भी हमें नहीं रोक सकता. I mean, वैसे to be honest, it takes guts to cut a line. Yeah. I would be so embarrassed. In fact, मुझे तो ये भी embarrassing लगता है कि जब मैं जाती हूँ ना कहीं, so basically हमने गाड़ी ली थी तो उसका वो मैं बनवाने गई थी, रजिस्ट्रेशन कराने गई थी और स्मार्ट कार्ड बनवाने गई थी. तो वहाँ पर ना आपको औरतें नहीं होती, सो आई वॉज लाइक पता नहीं कोई रेयर वहाँ पर. ठीक है, तो जब मैं ये काम वहाँ करवाने गई और उसके बाद लाइनें थी तो दे केप्ट टेलिंग मी कि आप आगे चले जाएं, आप करने, लाइक दे वर वेरी accommodating and nice like that, but it made me feel really bad because I was like यार I get it, like I know what you're trying to do and you're giving me that respect and you don't want कि अच्छा मैं wait और मारूं, but I also felt bad like यार ये लोग भी तो लाइन में खड़े हैं, like exactly. everybody has a life. No, see, यहाँ पर आप औरत कार्ड नहीं इस्तेमाल करी, लेकिन आपसे करवाया जा रहा है. स्पेशली बैंक्स में ही बहुत होते हैं. ATM में कोई होता है ना तो फिर बाद में वो कहते हैं आप जाए, तो फिर मैं कहती हूँ नहीं आप जाए, और फिर वो अगला चला जाता है. बट आई थिंक अगर हमें ये मौका मिल रहा है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वी डोंट टेक दिस अप ऑलवेज, एक्चुअली से कि नहीं आप जाएं. हमें हर उसमें चीज़ में जेंडर को नहीं बीच में लेके आना चाहिए. लाइक that's fair, right? You should be equal and fair. Unless that there are certain things like जब for example राफेल होता है मेरे साथ, या मैं भी किसी को देखूँ किसी के साथ बच्चा है तो I'd be like यार आप पहले कर लो, because बच्चा भी ख्वार हो रहा है ना. So and it's very difficult. I know how difficult it is. So then you know मैं लोगों को दे देती हूँ, लेकिन तब भी अगर मुझे लोग देते हैं तो मुझे बुरा फील होता है कि so many people कब से इंतजार कर रहे हो ये सारा. But if usually I have Raphael, then I take the opportunity. Like okay, yes, thank you so much. I need to do this. हाँ. So yes, बाउंड्री से हम वैसे ये भी बाउंड्री है बाय द वे, किसी की बाउंड्री का बाउंड्री ही है, तोड़ना ही है. Let's talk about physical personal space. So a lot of the times, यार एक दफ़ा मेरे साथ ये हुआ था, I attended an event और उस event के end पे ना there was like this massive group picture. So it was a class कोर्स, ठीक है, और उसका जो है वो फाइनल डे था और इवेंट था, फिर सर्टिफिकेट सेरेमनी थी, एंड देन एंड में ना एवरीबडी वाज टुगेदर एंड देन यू टुक लाइक अ फोटो, सो बिग फोटो. तो उसमें मैं खड़ी हुई, लाइक आई डिडंट नो द पीपल, लाइक एवरीबडी फ्रेंड्स नहीं थे, लाइक ठीक है क्लास साथ ली थी. तो जब हम खड़े हुए साथ तो कोई मेरे पीछे आके खड़ा हुआ, एंड देन शी जस्ट पुट हर हैंड ऑन माय shoulder and I was just and I had no idea who this person is. तो कुछ लोगों को तब तो मैं मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि यार ये कुछ लोगों को बिल्कुल फिजिकल बाउंड्री का आइडिया ही नहीं है, फिजिकल स्पेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और बाउंड्री का मतलब, और करीब आ जाए करीब आ जाए और फिर हाथ रख लिया, मुझे वो थोड़ा सा वैसे नॉर्मल नहीं लगा था. आई डोंट नो व्हाट दैट वाज, बहुत करीब आ जाए पे हाथ रख लिया था और मैं ना बहुत ट्रॉमेटाइज हो गई थी. ऐसा होता है. या सो आई डोंट नो व्हाई लाइक सम पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि यार आप हर किसी की एक फिजिकल स्पेस होती है, एग्जैक्टली लेंथ जो है ना आपको लाइक रखना होता है और आपको पता होता है कि सिचुएशंस में आपने नहीं रखना. एग्जैक्टली. हाँ. अब कुछ दफ़ा ऐसा भी होता है कि अब आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, जैसे अब फॉर इंस्टेंस मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आई कैन हग हर, मैं उसको मार रही हूँ व्हाटएवर, मैं उसको जो भी शुगर लग रहा है, बट उसी तरह का बॉन्ड मेरा ज़रूरी नहीं कि मेरे बाकी फ्रेंड्स के साथ भी हो. बट व्हेन दोज फ्रेंड्स दे एक्सपेक्ट कि ओ माय गॉड तुम उसके साथ यू आर शेकिंग हैंड्स, यू आर हगिंग, यू दिस, व्हाई कैन यू डू दिस विद मी. तो वो बहुत बंदे खुद है, सर यू आर अ फ्रेंड ओके, बट देयर इज़ अ बाउंड्री दैट यू नीड टू फॉलो. बट विद यू कैन नॉट बी माई बेस्ट फ्रेंड, कम ऑन. I remember this is kind of a challenge that I faced. So I had this interaction with मेल पीपल, ठीक है. तो when I first, अब यहाँ पर रिलीजन वाली बाउंड्री आ जाती है. सम बाउंड्रीज आर सेट बाय योर रिलीजन, ठीक है. तो उनमें से एक है कि ऑब्वियसली यू डोंट शेक हैंड्स विद द ऑपोजिट जेंडर एंड ऑल दैट. तो अब मैं न्यूली यूनिवर्सिटी में आई थी, आई वाज लाइक सीन यूनिवर्सिटी कल्चर अच्छा क्या है, नहीं हूँ,
I guess it was my second week, and what happened was that I was with a male friend and we were like walking, और सामने से ना कोई सीनियर आए. तो शुरू में आपको बहुत होता है कि यार सीनियर से बनाओ ना. तो फिर बाद में was like hey what's up, और फिर बाद में एक के साथ वो किया, हाई फाई किया दूसरे के साथ, और फिर मैं आई वॉज कन्फ्यूज एंड आई रियली डिड नॉट वांट टू एम्बैरेस हिम. लेकिन सिंस उन्होंने ऐसे किया था मैंने उनको हाई फाइव दे दिया. ठीक है, तो फिर खैर गुड सीन, हमने सारी बात करनी जो भी करनी थी. एंड सम आई गेस द नेक्स्ट डे और 2 days लेटर जो मेरे साथ जो मेल फ्रेंड था ना, लाइक उसने अपनी जहनियत बना रही थी कि यार शी इज़ फाइन विद हाई फाइविंग. तो उसने ऐसे किया एंड आई वाज लाइक अच्छा. उसके बाद जब मैंने किया ना, व्हेन आई डिड, मैंने जब सीनियर को हाई फाइव किया था मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था कि आई शुडंट हैव डन दैट, बिकॉज इट वाज अ, ये मेरी पर्सनल बाउंड्री है कि मैं नहीं करूँ. एंड जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू प्लीज़ हिम, ठीक है, या उनके साथ बनानी थी, दैट डज नॉट मीन कि मुझे अपनी बाउंड्री क्रॉस करनी थी. तो आई कुड हैव लाइक पोलाइटली मैं मना कर ली थी. अब इसकी वजह से क्या हुआ कि लाइक मेरे जो मेल दोस्त है उसने ऐसे किया मुझे, एंड आई वाज लाइक नो आई डोंट touch boys, I don't high five boys. And he was like, what the hell are you saying? कल तो कर रही थी तो. या ऐसा होता है, ऐसा बहुत होता है. So that was really funny. मैंने कहा नहीं, but I don't do that. तो फिर उसने रिस्पेक्ट किया था उसका. But I like how he questioned me. someone once said to me कि a male friend of mine कि यार मेरा तो ये सीन होता है अगर मुझे लड़कियों का नहीं पता हो ना उनका क्या सीन है, क्योंकि कुछ some girls are like okay with a lot of stuff. अब बेचारे लड़के जो हैं सोचते ही रह जाए. So he said कि I always let the girl define. So in the sense कि वो कभी भी जब भी किसी लड़की से मिलता है ना तो he's never the one to put his hand forward first. He's never the one to go for the hug first. He's never the one to वो first. अगर वो करती है तो मैं कर लूँगा, लेकिन अगर वो नहीं कर रही तो फिर मैं आइंदा कभी भी नहीं करूँगा. एग्जैक्टली. सो उसने कहा कि तो मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं हु आर कम्प्लीटली फाइन विद हगिंग, कुछ फ्रेंड्स हैं जो हैंड शेक करती हैं, कुछ है जो कुछ भी नहीं करती हैं. सो वो यही था कि मतलब आई जस्ट लेट माई फ्रेंड्स डू इट, और उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि अच्छा मेरी ज़्यादा अच्छी दोस्त कौन है क्या, बिकॉज इट्स जस्ट अ बाउंड्री, इट्स अ फिजिकल बाउंड्री एंड इट डजंट हैव टू अप्लाई कि अच्छा आपका वो किस तरह का, बिकॉज इट्स अ मेल फीमेल थिंग, राइट. ये जो आप बात करी इससे मुझे याद आ रहा है कि दीज आर सिग्नल्स, राइट. ये सिग्नल्स हमेशा लड़कियां ही डिफाइन करती हैं. तो लाइक आपकी तरफ से अगर कोई सिग्नल मिला होगा, दैट इज़ लाइक मोस्ट लाइकली द केस वाई द अदर पर्सन स्टार्ट्स एक्टिंग, स्पेशली लाइक अगर आप ऑपोजिट जेंडर की बात कर रहे हैं कि हाउ ही स्टार्ट्स एक्टिंग. ठीक है, मतलब वो आपकी तरफ से सिग्नल का इंतजार कर रहे होते हैं. तो अगेन इट्स द सेम थिंग कि वो सिग्नल का इंतजार करे कि ओ इफ शी इज फाइन विद इट देन आई विल डू, मतलब हाई फाइव भी कर लूँगा या हग कर लूँगा. या सो बट मैंने एक और चीज़ देखी है. सो बेसिकली अ लॉट ऑफ द टाइम्स ना, लाइक अगर इस तरह की सिचुएशन होती है कि मेरा एक फ्रेंड था और मेरी एक फ्रेंड अभी भी हैं, बट हम लोग वी वर सो हम कोई 3-4 लोग थे, एंड देन we were out, and then he was dropping us home. And when he dropped, so me and that one friend had to so we were a couple of friends and we had to get dropped home. ठीक है, तो जब उसने हम लोगों को ड्रॉप किया तो क्या कहते हैं, हम 3-4 लड़कियां थीं जिसमें से 2 were fine with it, 2 were not fine with it. तो उसने जो है सब मिले हग्स और whatever और हैंडशेक्स जो भी हुए. तो जो वो मेरी एक फ्रेंड थी ना, she was just like he went for a hug and she was just like no. And he was just like, come on, what's the big deal? Yeah. Now that's wrong. Yeah, that's really wrong. That's wrong. Exactly. And then the reason was कि जब बहुत सारे और लोग भी होते हैं और basically it's embarrassing for you. Exactly. So when you go for a hug or a handshake and the other person says no, तो आप इतना embarrassed होते हो कि फिर आपको react करने आता है और आप कहते हो what's the big deal? So आप अपनी embarrassment को छुपाने के लिए अगले बंदे को gaslight करते हो. वो ईगो पर हर्ट करती है ना, लाइक आइदर जेंडर ईगो पर हर्ट करती है. So it's very important to understand कि अच्छा किसी ने नहीं किया, इसमें embarrass होने वाली बात नहीं है, ये उसकी boundary है. They're just not good with it. Yeah, they know. Some people are not huggers or handshakers or anything. Yeah, some people are like that. Yeah, some people are not huggers. वो अपनी लड़की फ्रेंड्स को लड़कियां हग नहीं करती. I have such friends जो कि बिल्कुल ऐसी होती हैं, मतलब मैं इवन अगर हाथ भी आके करती हूँ ना तो फिर बाद में they were like, और फिर मुझे आता था she's not we don't shake hands. Yeah, और वो आपके लिए embarrassing होता है. Like I remember I met someone एक दफ़ा and I went for a hug and she said oh I'm not a hugger, and that was embarrassing for me, but
that's when you have to be like, oh, she's not. Yeah. Like, this is fine. This is fine. nothing to be embarrassed about, yeah. She's not a hugger. It's okay. So, I usually ask my friends, okay, do you want a hug? Yeah, can I hug you before I hug them? Yeah, you asked me as well. yeah, and then I started doing that as well. कि अच्छा यार आपको नहीं पता होता, like आप फिर पूछ लो. If you're not sure, like just ask the other person. Not only in friendships, मेरी तो अम्मी का ये system है, like she gets very irritated when someone is like hugging her or kissing her. She's like दूर बस ठीक है. तो I always side hug her. I don't just do that. तो वो होती हैं, वो irritate हो जाती हैं. That's her personal boundary. Yeah. She's not good with it. She's not comfortable with it. So personal boundaries is in every relationship. ऐसा भी बहुत बार हुआ है, दिस इज़ काइंड ऑफ अ फनी थिंग, कि ऐसे भी बहुत बार हुआ है कि कोई बड़ी अगेन आंटी झूम रही है सर पर और अच्छा जो दुपट्टा पहने है उस पे लिपस्टिक लग जाता है. आई रिमेम्बर एक बार हिजाबी प्रॉब्लम, एक बार मेरे स्कार्फ पे लग गया था, एंड उस वाइट स्कार्फ पर, लाइक आई वाज इन माय स्कूल बैक देन, ठीक है, और सुबह को हुआ था. एंड देन आई वेंट टू दिस स्कूल एंड इमेजिन एक टीचर पूछ रही है ये क्या लगा हुआ है तुम्हारे स्कार्फ, एंड आई लाइक क्या लगा हुआ है, लाइक ये रेड पिंक ये क्या है, एंड आई लाइक नो आई डोंट हैव लिपस्टिक. वो बहुत स्ट्रिक्ट भी होते हैं ना कि कोई बच्चा इस तरह की एक्सेसरी ना लाए, और आई एम लाइक नहीं ये आई डोंट नो कहाँ से लग गया, पता नहीं लग गया. And you know there are some aunties जो कि brides को इतने प्यार से प्यार करती हैं कि उनके सारे बालों का खराब हो जाते हैं. ऐसा होता है. दिस इज ऑल्सो अ पर्सनल बाउंड्री. लोग कहते हैं कि बालों का मजाक नहीं है, और फिर आप उसी चीज पर तंग करने लग जाते हो, या फिर वो वाली चीज. व्हाट सेंसिटिव इज सेंसिटिव. नाउ यू कांट जस्ट से कि अगेन व्हाट्स द बिग डील, या मेक अ जोक अबाउट इट कि यार तुम्हें क्या हो गया. स्पेशली अगर क्योंकि ज्यादातर आप तंग उन्हीं को करते हैं ना जो से प्रोवोक होता है, लाइक दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इट, राइट. तो अगर आपको पता चल जाता है ना कि दिस इज अ वीक पॉइंट, इससे ये इंसान प्रोवोक होता है, तो आप मजीद उसको करने लगते हैं या बग करते हैं. हाँ, I think a lot of this needs to change. Yes, a lot of this needs to change. Yeah, that's true. Like I feel like कि अगर हम इन चीज़ों से रिलेशनशिप्स को डिफाइन या अटैच ना करें तो इट विल बी ईजियर, बिकॉज लोगों को लगता है कि अच्छा कि यू नो अगर इस तरह कर दिया तो हमारी दोस्ती उतनी नहीं है, या रिलेशनशिप ख़राब आप कर दो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स, देन दैट्स नॉट फेयर. जस्ट बिकॉज यू नो द अदर पर्सन डजंट अलाउ यू टू डू दिस और दैट, लाइक यू नो बाउंड्रीज के बियॉन्ड होती हैं चीज़ें, और आप हर किसी के लिए डिफरेंट रख भी सकते हो. आई मीन whatever you are comfortable with, that's the most important. Comfort comes first. Comfort comes first. Friends के साथ आपकी और बाउंड्रीज होती है, फैमिली के साथ आपकी और बाउंड्रीज होती हैं. Exactly. तो पर्सनल बाउंड्री इज अ वेरी, मतलब इसके बहुत ज़्यादा डाइसेक्शंस इसकी बनती हैं ना. But I do think कि सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज फ्रेंडशिप्स में क्रॉस होती हैं. Exactly. फ्रेंड्स को नहीं आता रिस्पेक्ट करना. आपको ये होता है कि मतलब अगर आप फ्रेंडशिप में किसी को कहो ना कि बाउंड्री, तो वो समझते हैं फ्रेंडशिप ही नहीं है. लाइक फ्रेंडशिप कार्ड ना, इसमें सब कुछ. इन फ्रेंडशिप यू आर अलाउड टू डू एवरीथिंग, व्हिच इज रॉन्ग. और फ्रेंडशिप्स में ये भी तो होता है ना कि पीपल आर नॉट एग्जैक्टली sometimes in a lot of friendships you feel more attached and closer to someone than they feel to you. Yeah. This is a big problem. Like someone will go around calling you their best friend and you're just like, what? हम besties कब से हो गए? Yeah, it happens. I also think कि लोग acquaintance को दोस्त बना लेते हैं. हाँ. Like okay, I know सानिया, ठीक है, we are not friends, ठीक है, लेकिन मैं कल को कहूँ ओ सानिया हाँ वो तो बड़ी अच्छी दोस्त है. आई मीन नो, लाइक आपको एक्चुअली रिस्पेक्ट. सोचे कल को कोई सानिया के पास आया करिए इज़्ज़ा तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है. सानिया भी लाइक she's just an acquaintance. Like I just got to know her. We work together. And it's not like I don't like her. Like I really like her, but हमारी भी वो relationship नहीं बनी. बिल्कुल ऐसा. Stuff takes time. It does. तो एक वो ना लेबल, और वो भी दोस्त का लगाना, आई थिंक दोस्त का लेबल, लाइक आप शुरू में वाकई जब आप छोटे होते तो आप हर इंसान को कहते थे ओ ये भी दोस्त है, ये भी दोस्त है, ये भी दोस्त है. But like when you grow up you should get it. समझ आ जाती है दोस्त कौन है कौन नहीं. हाँ, जब शुरू में ना थोड़ी सी लाइक मुझे इंस्टा पॉपुलैरिटी मिली थी ना, तो तब मैं बहुत ज़्यादा लोगों की फ्रेंड हो गई थी.
Make sense. कि नॉट लाइक मेरे फेस पे फ्रेंड हो गई थी बट पीछे से फ्रेंड हो गई थी कि मतलब लोग I know Humna. वो तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है जबकि लाइक यू नो ठीक है वी गो टू द सेम यूनि मे बी एंड लाइक यू नो आई हैव बीन नाइस टू यू बट लाइक आई एम नॉट योर लाइक फ्रेंड या सो ये मेरे साथ तब बहुत ज़्यादा हुआ था where suddenly I was hearing from people that I am friends with someone. Also, we are actually recording this on a day जो मुझे बहुत जो मुझे like 1 year ago मुझे ये वाला दिन बहुत हिट हुआ था. Why? Because हमारा था कॉस्ट्यूम डे ना, तो सब किसी कैरेक्टर की तरह ड्रेसअप होके आए थे. आई ड्रेस्ड अप एज द मार्शमेलो, ठीक है. एंड लाइक बिकॉज यू नो मैंने सारा वक्त वो हैट पहन रखा था. द मार्शमेलो डीजे का आपको पता ही होगा, उसने मार्शमेलो पहना होता है, मास्क या फॉर पीपल हु डोंट नो, तो उसमें आपका चेहरा नहीं नजर आ रहा होता है. यू हैव दिस क्रॉस ऑन योर आईज और फिर यहाँ पे एक स्माइल होती है, ठीक है. पीपल एक्चुअली कन्फ्यूज्ड मी और मेरा गेटअप भी सारा ऐसा था. पीपल थॉट आई वाज अ बॉय और एक ने तो कहा बहुत चुल चढ़ी हुई है इधर, मैं तुझे बताता हूँ. और उस वक्त आई हैड टू गो थ्रू व्हाट बॉयज गो थ्रू, ठीक है. मतलब कोई इंसान मुझे नहीं जानता, वो इंसान मुझे नहीं जानता था और वो कह रहा है कि आज चुल चढ़ी है, मैं तुझे बताता हूँ. एक तो ये चीज़ आई हैड टू गो थ्रू कि व्हाट बॉयज गो थ्रू एवरी डे, ठीक है, अगेन बाय अ स्ट्रेंजर. और फिर आई एक्चुअली काइंड ऑफ फेल्ट के what it feels to be used बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैं बिल्कुल बैठी हुई थी अकेले. अब मैं बस बिल्कुल किसी के साथ एसोसिएट नहीं कर रही थी खुद को और मैं अकेले ही घूम रही थी यूनिवर्सिटी में. एंड बिकॉज लोगों ने कहा ओ बड़े मज़े का पीस है ये, यू नो आई शुड जस्ट हैव अ पिक्चर. अच्छा लोग चलते चलते मेरी तस्वीर खींच रहे हैं, ठीक है, या फिर आ रहे हैं सेल्फी लेके जा रहे हैं. एंड आई लिटरली फेल्ट यूज्ड. और मैं इतनी ज़्यादा, मैं उसके बाद ट्रॉमे में चली गई थी और फिर बाद में ट्रॉमे में जाकर मैं यूनिवर्सिटी के कोने में बैठ गई, ठीक है, ऐसी सड़क पे. एंड इमेजिन मैं अभी उस फेस से गुजरी और उस वक्त भी लोग चल रहे कह रहे ओ मार्शमेलो, मोबाइल निकाल के तस्वीर खींच के गो. तो मुझे बहुत फील हुआ कि यू नो व्हाट दिस इज़ व्हाट public figures they go through. And it is so hard to see कि यार कौन आपका दोस्त. It's not actually too hard to see क्योंकि बहुत सारी आपको visual clearance आपको मिल जाती है कि कौन दोस्त है कौन क्या है. But वो वाला जो दिन था ना, I felt कि भाई you know this is like being treated as shit. Exactly. टिश्यू पेपर आप खुद को फील करते हो ना, इस्तेमाल किया छोड़ दिया. So this is true. And public figures के साथ इस तरह होता है कि they are not considered human. Humans, yeah. They're considered humanized. They're considered, I don't People know, pleasing? objects that they're supposed that are just supposed to be what you want them to be. Yeah. उनकी कोई अपनी personal space, personal life है ही नहीं. Personal life नहीं है. They don't Opinions भी नहीं They है. don't Opinions feel नहीं. things. They don't like because they're public figures. So they don't feel hurt when they are hated on or when they when their boundaries are crossed or when just अब like recently मैं हॉस्पिटल में थी, like जब मुजम्मिल की सर्जरी का वो सारा हो रहा था एंड वी वर देयर और उस वक्त वी वर जस्ट अबाउट टू गो इन फॉर द डॉक्टर. तो हम बाहर हॉल में खड़े हुए थे एंड देन somebody came to me and she said कि मतलब आई मिली वो एंड शी सेड पिक्चर खींच सकते हैं एंड वी वर इन अ रियली लाइक weird space at the time. And you know आपके mindsets भी आप परेशान हो आप like और आप उस जोन में नहीं हो and you don't feel like it right now, right? Yeah, true. And that was the first time. वरना पहले होता था कि पहले भी मेरे साथ हो चुका है that I wasn't in a mood or wasn't in a good place और मुझसे आके मेरे साथ लोगों ने आके पिक्चर्स खींची हैं और मैंने हमेशा स्माइल करके पिक्चर खिंचवा लिए. But that was the first time I said कि no, like I just want like एक सिनेरियो मैं पेश करी हूँ लोगों के सामने कि imagine like you are with a loved one at a hospital and that person has to go through a surgery and you don't know if it will be successful or not and some random person is coming up and saying कि मैं आपके साथ तस्वीर खींचूँ and that is so and you're just not in the mood, ठीक है, and then if you say no, ठीक है, आपको शाम को पता चलता है कि एक पोस्ट आई हुई है कि फला person acted so rude with me and you actually have a picture किसी तरह. Like what? That was my fear. That has always been my fear. So there have been lots of times where I haven't like not like हर वक्त लोग मुझसे पिक्चर खिंचवा रहे होते. I'm not saying that, but there have been a lot of times where people have wanted pictures and selfies with me, and I have not been. And this is not to say that I don't appreciate when people come and ask, but
it's okay if they come and ask, but it's the part where I'm afraid that if I say no, I will come, like people will assume that I'm an arrogant person. And there will be backlash on social media. And there will be backlash on socials about it कि हम ना असल में तो बहुत rude है, जबकि it's just that like right now I can't get this picture. Yeah, not always in the face कि oh my god I'm ready and click a picture with you. I don't personal life होता है ना, like maybe like even with me, अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि हम सेल्फी ले लें, you'll be like okay, ठीक है, but शाम में जब आपका अपना family time हो रहा होगा and I come आपके हम सेल्फी ले, like that is a different setup, you're not in the mood, ठीक है. और उस वक्त मैंने उस लड़की को बोल दिया था कि no, but मुझे constant fear था कि ना like you'll be labeled off as like कुछ आना जाए, but then उसमें आया था I don't care, like I think people can understand enough कि मैं किस तरह की situation में थी, exactly, something very substantial to defend myself with as well because था hospital, but still like it's just sad कि आपको इस चीज़ का like डर होता है, you know कि लोग आपको यूं समझेंगे just because you want लोग क्या कहेंगे, just because you want to define a boundary, but you have to ना मतलब इस position पे you have to start but I think so it depends on awam and log as well कि even though they're a public figure, they're still human, they still have a personal life. That's what they don't understand, right? But they should. Like उनको लगता है कि उनका हक बनता है exactly कि अगर वो ये चाह रहे हैं तो ये आप कर again again you start treated like an object and people think कि अच्छा ये है इस जगह पर because they are supposed to please us or something, और आप वो करें जो हम कह रहे हैं. इसीलिए तो paparazzi और ये सब चीज़ें they are so dangerous, मतलब they are invading everyone's personal life. अभी recently in our social media like showbiz, there's this couple, they're getting divorced and they're going into the courts and everything, like why? Let them be. That's so weird. It's like really sad. like आपकी personal life is not दुनिया का तमाशा. Exactly. I mean आप वहाँ तक like whatever they're doing वहाँ तक आप उनको वो करो, but the fact is कि I don't know why. You know, but honestly, hats off to all the influencers and public figures जो कि अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा चंक सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, जो कि एक आम बंदा सोचे और they're like ऑनेस्टली मैं बिल्कुल भी नहीं शेयर कर सकूँगी मेरी पर्सनल लाइफ टोटली, पर जैसा आप हैं, यू शेयर राफा ऑन सोशल मीडिया योर एवरीडे रूटीन, एवरीडे लाइफ विद हिम और जनरली मैं सोच रही हूँ कि यार your family is exposed, आपको नहीं पता होता, it's like hats off. उसमें it takes guts to do that. It takes a lot of courage not to just like share about your personal life, but just to put yourself out there. It takes a lot of courage. Because you don't know how people are going to respond to that. What have been like your struggles as with personal boundaries as an influencer and public figure? I think one of the main things is कि लोगों को यही लगता है कि they can say whatever and आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, and they expect you to grow a thick skin. Because आदत हो जानी चाहिए. What's the big deal? Like लोगों को लगता है कि their words don't matter, and a lot of the times it's like कि आपको आदत हो भी जाती है बहुत सारी चीज़ें सुनने की, but the fact is that I feel that even if I'm reading certain things about me or जो भी है, they are going into my subconscious and they are affecting me. Exactly. मतलब to the point कि next time I will take like the more they do that, the less and less I can be myself. Because it's just like like people मतलब अब मैं ये भी नहीं कर सकती और मैं ये भी नहीं कर सकती, मैंने यूं किया तो अब लोग यूं कहेंगे, मैंने यूं किया तो अब ये होगा, और मैंने यूं किया तो ये होगा. But I do think that over time I have come a long way where a lot of things are just like whatever. Like they really don't matter. You will have to ignore. You learn to ignore. You learn to ignore. You learn to like not care. But मुझे यही होता है कि पता नहीं मैं मेरे सबकॉन्शियस में जा रही हैं और वो एक्चुअली मेरी मेंटल हेल्थ को किस तरह अफेक्ट कर रही हैं. How wounded I am, by all the things that people have said to me that were not fair, and they're not fair simply because people don't actually know the reality of you and your life. So whatever comments they're making and the hurtful things that they're saying, they are not fair because they don't know what's going behind. Yes. So आप जो मर्जी कह लो, like मुझे होता है आप किसी भी public figure के बारे में कुछ भी कह लो, like you really don't know what's
What's happen. behind? What's Yeah. behind? Like you can share, sure, like you can share your experience with them, but you can't define a complete वो कि अच्छा उनकी लाइफ में क्या है या बिल्कुल। वो क्या है. So मतलब जिस तरह for Always two example sides of the picture, ना? Exactly. And Yeah. this is a picture that you're putting up कि अच्छा लोग ये देखेंगे. यहाँ पर क्या है लोग नहीं देख रहे हैं. Yeah. And that's what you're That's choosing, true. right? Yeah, so a lot of the times it's like लोग इस तरह की बातें करते हैं, मैं सोचती हूँ my God that's not fair कि किसी ने मेरे बारे में ये बोला या ये लिखा. Also another thing with public figures is that people will uphold them for certain things that they don't do themselves. Oh God. But they Yeah. need to do it. You know, वो public figures है, वो ये नहीं कर सकते. Again, so that is a disassociation of realizing that I am also human. A human, exactly. जिस तरह हुआ ये था एक दफ़ा कि सोल बिचेस है ना एक प्लेटफॉर्म, उस पर उन्होंने when I went to स्कर्दू and that was अभी तब फ्लड्स आए हुए थे तो तब मैं स्कर्दू गई थी. तो देयर वाज दिस होल थिंग अबाउट मी ऑन दो कि हमना को देखो दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और ये जो है ना कद्दू बैठी हुई है. स्कर्दू गई हुई है एंड लाइक यू नो शी इज़ हैविंग द टाइम ऑफ हर लाइफ. And I was just like, what, did you stop living the day that the floods came? Exactly. Yeah. Did you No. stop going out? Oh, God. doing Yeah. things? No, No. but मैं नहीं कर सकती. Yeah, you can't. And You cannot. You cannot. either you want me to pretend that I've stopped living my life that I can do. कि जब से फ्लड्स आए हैं, बिकॉज आपको तो नहीं करना पड़ रहा ना, लेकिन मुझे प्रिटेंड करना चाहिए, या मैं प्रिटेंड करूं बिकॉज टेक्निकली आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप लिविंग माई लाइफ, जो भी हो जाए. Just because. Obviously, because- nobody stops. किसी की भी वो Yeah. नहीं. And that doesn't mean कि यार I don't feel for what happened or I'm not playing my part. I In fact, remember even आपने stories भी लगाना आपने बंद की बिल्कुल होगी बंद कर दी थी. एंड द रीज़न फॉर दैट वाज इज़ा बिकॉज मेरा दिल ही नहीं मानता था कि जो सिचुएशन चल रही है इस Yeah, वक्त मैं अपनी exactly. लाइफ के बारे में शेयर करूँ. इट वाज अ वेरी पर्सनल थिंग. इट वाजंट इवन लाइक it wasn't that I'm pretending that my life has stopped. It was me not feeling comfortable with Yeah, the fact कि sharing, दुनिया में yeah. क्या हो रहा है और मैं इस वक्त अपनी लाइफ शेयर Yeah, करूँ, राइट. सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई कम्प्लीटली स्टॉप पोस्टिंग एनी स्टोरीज. अगर वो आती थी तो वो फ्लड रिलेटेड ही आती थी. एंड देन मैंने स्कर्दू की स्टोरीज बहुत बाद में जाके Yeah, पोस्ट की थी, okay, वंस आई okay. वॉज बैक एंड लिविंग माई लाइफ नाउ नॉर्मल. तो उसमें भी खैर लेकिन लोगों ने आके ना इतनी बेइज्जती की उसकी कि मतलब क्या हो गया तुम्हें, लाइक डिड यू स्टॉप ईटिंग, डिड यू स्टॉप लिविंग, डिड यू स्टॉप गोइंग This आउट. is so unfair sometimes. That's लोगों ने आके उससे पूछा और फिर ये भी कहा कि लाइक डिड यू लाइक एंड यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे जस्ट वेंट थ्रू समथिंग, सो एज अ Yeah. फैमिली दे नीडेड इट. दिस वाज पोस्ट सर्जरी. Oh. So this was like, you know, as a family, like they needed it, like they've gone through something. So how can you be so harsh about this? Yeah. So खैर मतलब मुझे अब इस तरह की चीज़ें से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता because it's just stupid. Like it's stupid, Yeah, right? yeah. But again, you see how unfair that is. Because Yeah, that's people, very unfair. they're going to do whatever they're doing in their circles and in their whatever. But if you are doing it, then Oh, You're also, wrong. one more thing कि अच्छा बिकॉज आप इन्फ्लुएंसर है तो आप करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में कुछ बोले ना. व्हाट डू यू फील अबाउट इट? एंड इफ यू चूज टू नॉट स्पीक तो अगेन लेबल्स आ जाएंगे कि यू नो व्हाट मे बी शी इज यहाँ की या मे बी इस पार्टी की है और वट एवर. That's not. Yeah, and you don't have to speak on everything. And I specifically feel like why am I being forced, like जब लोग मुझे आके इस तरह कहते हैं, why am I being forced to talk about things that maybe I'm not Comfortable sharing. not just comfortable. Comfort is You very don't talk important, of course, about, but हाँ. also maybe I don't know enough about. Yeah, you don't know enough Then about how it. can I? हाँ, Because exactly. see, my position really matters. My opinion matters because Yeah. a lot of people might base their opinions on my opinion. Yeah, true that. That's true. ठीक है. And if I feel like that I am not very sure about my own stance or my opinion or what's going on, या मैं भी इंसान हूँ, मैं भी overwhelm होती हूँ, मुझे कभी कभार नहीं समझ आती कि हो क्या रहा है भाई. So I don't want to speak up about everything. So why do I have to? Exactly. You know, कोई compulsion तो नहीं है. compulsion नहीं है. I remember one of our YouTubers getting cancelled because of this कि अच्छा आप तो इस इशू पे बोल ही नहीं रहे. So they were like, you know what, cancel करो, ये तो इंडिया की साइड ले रहा है.
कैंसिल Just कल्चर because बोला नहीं. Just because बोला नहीं ना. God. हालांकि like you know वाकई like I think सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अब आप एज अ क्रिएटर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, लाइक आप ज़्यादा लाइफ स्टाइल पर मे बी बेस्ड है, ठीक है, यू शोइंग योर एवरीडे रूटीन, Exactly. व्हाट इज हैपनिंग ऑन द इकोनॉमी, what is happening in the politics, like आप शायद उससे ज़्यादा आप Relate ही ना कर सकें, yeah, exactly. you don't know You don't know enough. you don't know. Yeah. अच्छा, शेयर करने की अलग बात कि अच्छा मे बी शायद आपको पता है लेकिन आप शेयर नहीं करें, लेकिन आपको वाकई क्या पता नहीं पता हो, Yeah. तो उसकी भी रिस्पेक्ट क्यों नहीं की जाती. हाँ. एंड ऑल दिस टाइम जब आपने नहीं पूछा, कोई भी, मैंने कभी भी पॉलिटिक्स रिलेटेड खुद को इस तरह का बंदा दिखाया ही नहीं कि आई एम रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स, Exactly. आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, Yeah. सडनली व्हाई एम आई बीइंग treated Judged like as a a journalist, ना, journalist, कि आप तो yeah. जर्नलिस्ट है, आप अपना स्टैंड दें. बिल्कुल. This is So so funny. interesting. It's so interesting how this world works. Yeah. And personally, to be very honest, यार, अगर मैं अभी इस वक्त मैं अपनी बात करूँ ना, आई एम एट दिस पॉइंट इन लाइफ वेयर आई डोंट होल्ड अप, लाइक आई डोंट वांट टू be like this person who knows what's up. Like what I'm trying to say is that जो मेरे अपने opinions या होते हैं ना, उसमें मुझे होता है कि यार see it's very hard to explain. So recently I have worked really hard on grounding myself more. ठीक है? So the more grounded I've started to feel, the more I've started to see that my opinion is not it. Yeah. It's not the only argument. ठीक है? And because I realized that उसकी importance on this platform becomes even higher, because then I'm like, you know, how can I influence people on a very serious topic and an opinion when I could be wrong? Exactly. Because I have no longer started to feel like I am absolutely right. Yeah. I've become this person who feels like I could be wrong. So पहले होता है ना कि when you feel like यार बस आप ही ठीक हो, तब बड़ा आसान होता है अपने opinion डालना. लेकिन जब आपको होता है कि यार मुझे क्या पता, reality, like you know, very honestly I've come to this point कि reality सिर्फ अल्लाह ताला को पता है, and I'm not going to be that is so person. true. That is so true. Yeah. It's that level of sort of humility I've achieved recently, Yeah. where I'm just like, no, I don't know. Oh, I was Yeah. And it's not to say that I don't have opinions anymore. I have opinions, but I'm not there to push them forward and be like, hey, this is This is the it. right one. Yeah. Yes. So I can discuss it in like small groups and settings, but where I know that some people are very influenced by my words, I'm not going to. Put it out there. That's Exactly. your responsibility, right? Yeah. You're literally doing your responsibility. कि अच्छा, Yeah, I'm अब ये not position going है तो- around proving myself right anymore. You know, maybe I am not right. Exactly. So वो वाली. I recently read a tweet के see all the things that's going around you. Now look at history. Yeah. And I was like, what? मतलब वो मुझे इतनी हिट की कि you know currently आप हर चीज़ देख रहे हैं तो आपको इतने सारे डिफरेंट तरह के ओपिनियंस नजर आते हैं, और फिर द हिस्ट्री दैट वी आर टॉट, लाइक लिटरली एट द एंड इस वर्ल्ड में कुछ भी असली नहीं है. आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन. That's true. वी नेवर नो एनीथिंग. अच्छा, असली की बात नहीं, यू नेवर नो इनफ. Yeah, it's changing so Yes. rapidly You that never know enough. Yes. So I just feel like कि मुझे होता है कि यार maybe there's a lot I don't know yet. Yeah. So how can I like put something so aggressively out there कि भाई यही ठीक है. And I've learned this on my time on the internet as well कि आप अपने एक चीज़ सुनते हो, लाइक आप एक क्लब को सुनना शुरू कर दो ज़्यादा, तो आपका एक बहुत हार्ड लाइन ओपिनियन बनना शुरू हो जाता है. आप दूसरे क्लब को सुनना शुरू कर दो तो आपका वो शुरू हो जाता है. एंड दैट्स व्हेयर आई रियलाइज्ड कि व्हेनेवर योर ओपिनियन इज बिकमिंग वेरी हार्ड लाइन्ड बिकॉज ऑफ अ सर्टेन ग्रुप, इट्स ऑलवेज रॉन्ग. Yeah. Because I have realized in my life that most things, I won't say everything, most things are gray. They're not black and white. Exactly. And if you have a black and white vision, then something is wrong. Wrong with Exactly. Yeah, True. there's something you are missing. There's something you don't know. So obviously there's something जो बहुत वो होती हैं, बेसिक होती हैं, आपको पता होता है कि यार ये तो है, गलत है, no, right. बिल्कुल गलत है. But most things are have a lot of layers. Yeah, that's true. So
50 फॉर एग्जाम्पल आप इंटरनेट पे किसी डोमेस्टिक अब्यूज़ के केस की बात करें, ठीक है, डोमेस्टिक अब्यूज़ का कोई एक्सक्यूज़ नहीं है. कोई मुझे आके कहे कि उसमें दूसरी साइड की भी कोई वो है, आर्गुमेंट है, वो नहीं है. भाई whatever the argument, you're not supposed to hate your spouse. बस जो मर्जी हो, ठीक है. So it's not about gender, it's not about male, female. Exactly. It's just about it's wrong. You don't do Equal domestic rights. abuse. Yeah, like you don't do that. So for me that's like, okay, no, that is black and white. But then there are a lot of things that have layers and a lot of things and personal agendas Exactly. and other agendas and Oh God. propaganda. Again, and personal personal opinions. agendas is such a scary thing. yeah, because as soon as I start feeling like कि मैंने बहुत सारे लोगों की एक चीज़ पढ़ी है और मैं पहले मुझे इस तरह होता था कि अच्छा हाँ लाइक मैं अवेयर हो गई हूँ बहुत ज़्यादा एक चीज़ के बारे में पढ़ के, लेकिन फॉर सम रीज़न नाउ आई हैव स्टार्टेड टू थिंक लाइक am I becoming more aware or am I a sheep that is just listening to a specific voice Crowd, or yeah. propaganda and falling for it. Yeah. So I really try to sort of, as soon as I start making a very hardline opinion, I look back and try to read the counter. Exactly. The yeah, world is true so that. diverse कि Yeah. आप किसी एक चीज़ के ऊपर वो नहीं specify नहीं कर सकते. The problem with people is कि they just continue to read what they want to believe. Exactly. Counter पढ़ने का दिल ही नहीं करता. दिल ही नहीं करता बिल्कुल. And so I started to make that conscious effort कि यार counter पढ़ूँ तो सही कि है क्या. And a lot of times the counter doesn't make sense and you're just like okay ये ठीक ही है. But it's that having that thing in you where you can be wrong. Yes. ये वाली चीज़ है. Yes. ये तो नहीं कि जो मैंने बात की that's पत्थर पर लगी. बस end. Yeah. It's true. I like how ये conversation जैसे start हुई, this ended up like an interview of Humna Baji. That is so cute. Yeah, and we got to know so much informative stuff from her. Yeah. That's really nice. But thank you for the coming here, having this conversation. बहुत मज़ा आया. Please मेरी कोई बात ना mind कीजिए. यही कहना चाहती हूँ कि things are not black and white. They're very grey. And everybody, you know, is, to be honest, at this point, everybody is just figuring it out. Exactly. You know, and just because I'm an influencer doesn't mean that I have to always get it right. I don't think anyone ever That's exactly figures what it I out. believe, right? कि I don't always get it right. Don't expect me to always get it right. Like, yeah. You're a human, you can make After mistakes. all, we all are humans and we make Yeah. mistakes and that's okay. Yeah. और मेरे साथ ये भी होता था ना कि अगर मैं आपने ओपिनियंस बहुत ज़्यादा डालती भी थी ऑनलाइन तो मुझे काउंटर आता था और जब मैं वो काउंटर पढ़ती थी ना I'd be like oh shit like this person is right और मैंने ये चीज़ डाल दी है और हज़ारों ने जो है देख agree. ली है, अब मैं क्या सबको बताऊँ but no. ठीक है. और फिर वो फर्दर आता है और फिर होता है बट नो ओके बट दिस. अब मैं बैठ के ये तो नहीं करती रह सकती राइट. सो आई जस्ट रियलाइज कि नो लाइक ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं बिकॉज आई कुड बी रॉन्ग माइट एज वेल स्टे क्वाइट ऑन दिस specific thing. So yeah, unless it's all very well thought out, unless I'm very sure, I just try not to engage on matters that I'm expert in. So thank you so much for tuning in and please comment and share and let us know how you feel about personal boundaries or what your personal boundaries are, or maybe an incident where An auntie might have. yes, but I would say that it's also super important to check yourself. ये मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा जो हैप्पी चिप के पेज पे जाता है ना कंटेंट, उसमें मैं वर्दा को कहती हूँ कि a lot of the times like we are saying कि टॉक्सिक लोग कौन होते हैं और बाउंड्रीज कौन क्रॉस कर रहे हैं आपकी और ये वो, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू पुट आउट कॉन्टेंट वेयर वी आर चेकिंग आवरसेल्व्स. Like, are we doing that? Because it's very easy to feel when somebody else does that to you. So check yourselves. Where are you the toxic one, or where are you the one sort of crossing the boundary? Because we all do it. And it's okay like to do things but it's important to know okay yaar maine ye mistake kar diya hai. Again, you could be wrong. So check yourselves, try to be respectful of the boundaries of others, and if your boundaries have been disrespected then please share those incidents with us. We'd love to read. Don't forget to subscribe and I'll see you next time. Allah Hafiz. Bye.